L40 stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. Magnificent seconds. liftoff of GSLV tracking. F-15 NVS-02 mission. 100th Petrol launch tracking. mission of ISRO embarks on its journey. PC tracking. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य सफलतापूर्ण First stage उत्थापन performance जीएसएलवी normal. F-15 रॉकेट का चारों L40s तथा कोर बूस्टर S-139 वर्तमान में प्रज्वलित हैं और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर लेके जा रहे हैं. An eastward mission launched at 106 degrees azimuth. Plus 40 seconds. GSLV core S-139 and the 4 L-40 strap-ons thrusting simultaneously. Cumulative thrust is 7,535 kilonewtons. प्रथम चरण में कोर बूस्टर है Plus 1 minute. जो कि Sharp one ठोस main नोदक पर auto. आधारित है. कोर Sharp two बूस्टर main auto. का प्रज्वलन काल लगभग 111 सेकंड का है. इसके पश्चात भी L40 जो स्ट्रपॉन बूस्टर्स हैं उनका प्रज्वलन लगभग 50 सेकंड और आगे चलेगा. इस तरह लगभग 150 सेकंड्स पर प्रथम चरण का प्रज्वलन काल समाप्त होगा. Action time for the core solid motor is 112 seconds and that of the strap-ons is 149 seconds. HTPB based propellant in S-139 and L-40s are powered by turbo pump fed Vikas engine based on earth storable propellant. Shar ground station acquiring the trajectory data. S-139 stage ban out. कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है. Plus 2 minutes. स्टेपॉन बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है. इस दौरान यह लगभग 3000 First किलोन्यूटन का stage प्रणोद उत्पन्न कर रहे performance हैं. normal. कुछ ही क्षणों में L40 स्टेपॉन बूस्टर्स बंद हो जाएंगे और GS2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा. L40 stages thrust cut off. Second stage ignited. First stage separated. Interstage separated. Closed loop guidance initiated. Current altitude is 81 kilometers. We are 169 seconds into the flight. Second stage performance normal. जी हाँ, जैसा आपने सुना, प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. यह लगभग 141 सेकंड का प्रज्वलन काल है. इस दौरान यह लगभग 846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. 01 has been launched by GSLV F-12 mission on 29th of May 2023. Master Control Facility at Hassan in 14 Karnataka minutes. and Bhopal in Madhya Pradesh monitors and controls the geostationary and geosynchronous satellites of ISRO. The Navik ground segment is responsible for parameter generation and transmission, satellite control, ranging and integrity monitoring, as well as timekeeping. Cryo stage performance normal. The NVS-02 satellite will be placed in geosynchronous orbit at 111.75 degrees east, replacing its IRNSS predecessor of the first generation. The positioning system principle is based on trilateration. That is, to know the position of any person or any object accurately, minimum 3 satellites should be simultaneously trackable at that point. And to know the time or altitude, Plus one 15 additional minutes. satellite should be monitored at that point. An accurate timing maintained by the onboard rubidium atomic clocks is the key to measuring precise fleet management to track vehicles and allowing the monitor to interact and obtain location-based services. With its continuous tracking and coverage capabilities,
NVS is said to become a powerful means in precise orbit determination of satellites. Other noteworthy applications include IoT based applications, emergency services, and timing services. We are 18 minutes 50 seconds into flight. Trio stage thrust cutoff. Plus 19 minutes. तृतीय चरण को अब Satellite injection conditions are achieved. बंद कर दिया गया है तथा प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त हो चुकी हैं NVS 02 satellite separated. और हर्ष का पल यहाँ पर सफलतापूर्वक NVS-2 उपग्रह को अंतरिक्ष NVS में 02 mission accomplished. उद्दिष्ट